investing in wonderful startups where we want to see the growth. Some of our exited startups are Biryani by Kilo, INC42, TSAW, Heliware, Freed, and many more. So today it's not about investments, but it's about AI. And today's masterclass is titled AI Made Simple, No Jargon, No Coding, your first AI toolkit, which already tells you one important thing, that session is not for data scientists, session is for decision makers. Our speaker, Rocky, has spent 26 years in the coaching and transformation space, which in AI language means he's been training humans before machines started learning. Rocky began his journey in academics, shaping how people learn for over a decade. In 2012, he moved into industry with Accenture, where he worked as a technology strategist, training trainers on what to teach, and how to connect learning directly to business models and business needs. He went on to co-found Suvin Consultants and Technology, focusing on hiring and large-scale corporate capability building, with long-term clients including EY, Tata Group, the Central Government of India, and Bosch. Since 2017, Rocky has been AI transformation coach for the CAG, working with government teams across Maharashtra, Gujarat, and Goa, helping organizations move AI from slides to systems. More recently, he has coached Bosch's leadership team across India, Mexico, and Vietnam. Why I feel that he's the perfect person for this topic, it's very simple, because I believe in whatever I have heard about him and seen online. He's a person who focuses over clarity than complexity, use case over buzzwords, that's what we are expecting today, and confidence before coding. So if you have ever felt that AI sounds powerful but confusing, this masterclass will change that. So please join me in welcoming our masterclass speaker, Rocky Jagtiani, and with a huge round of applause. Rocky, the floor is all yours. Great. So, दोस्तों, good morning to everyone. Good morning. Great. Thank you. So, मुझे पहले बताइए, let me set the language context first. आप English और हिंदी mix ज़्यादा comfortable feel करोगे? Only Hindi or only English? Tell me your choice. Perfect. Thank you. Great. दोस्तों, topic का नाम मैंने रखा हुआ है. I know my friend announced that no coding, no jargon. Yes, there is no coding, no jargon, absolutely. But we are making AI simple, because if you are a business owner of an MSME, or you are working as a decision maker in a bigger, larger firm, then I think you may be knowing already a lot of AI which I'm going to talk today. I'll make it very simple. You will may be knowing it, but what I would be making it is a clear-cut term and demystifying the overlapping facts. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे overlapping facts है, जिसकी वजह से मैंने notice किया है कि जब मैं discussion करता हूँ, because see 90% of my trainings which happen in a year, approximately my year 2025, the last year was like the best year of my career. You know, I had to take 400 flights and 300 trainings, and that was like, it took complete toll on me. You know, I got free on 25th of December, starting from 1st Jan. There was no free day in between. Continuous traveling, either working with the teams and delivering. But what I understood, one thing from the last 6 months, मैंने कल रात को एक LinkedIn post किया when I was coming back from Bosch Bengaluru office to Chandigarh here last night with the Bangalore flight. I am seeing from last 6 months the who's who in the industry sitting at the top positions in our Indian companies are looking at sovereign AI. They are looking at making AI models in our country. And I'll tell you one thing, the best part is that is very much possible. And it is actually coming up a lot. आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि जब कोई AI के बारे में बात करता है, जो मैं भी आज बात करने वाला हूँ वो सब चीज़ों के बारे में, ये 4 चीज़ें आपके मन और दिमाग में इमीडिएटली आ जाती है. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ, पहला है ChatGPT, दूसरा है Google Gemini, तीसरा है Anthropic का Claude, और चौथा है Gamma फॉर मेकिंग PPTs. ये 4 चीज़ें मैं किसी से पूछ लूँ ना, किसने कहा सेशन अटेंड किया हो, 8-9 यूट्यूब वीडियोस देखे हो, या ऐसे ही बस मुलाकात होगी किसी कॉन्फ्रेंस में, तो बंदा कहता है हाँ ये सब तो हम यूज़ करते हैं, ये तो हमें आता है, कूल. लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ आपको आज कि वो तो है,
that is necessary for business productivity. It's necessary. I will not waste my employees' time of 1 hour to make a PPT for my company presentation, for my client presentation, when I can do the same thing in 10 minutes. मैं बोलूँगा बॉस आप 10 मिनट वेस्ट करो PPT बनाने में, मेरे लिए 2 और क्लाइंट फाइंड करो. That is better for me rather than wasting 1 to 2 hours and making one PPT for one particular proposal and one particular draft. Many companies are having this problem. They say, Rocky, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सेटअप है, मेरे पास प्रोसेस है, बट न्यू क्लाइंटल कैसे मिले? काफी डिफिकल्ट है. हाउ डू आई गेट न्यू क्लाइंटल? Obviously, same thing applies to me also, no? If you're in service industry or trading or manufacturing, applies to me. I'm also in service industry. So how do I get my next client? How will I get a client like an EY for all India and Philippines? How will I get a client like Bosch for across the world? Trust me, it is only on the power of LinkedIn connects and proper emailing which I do to them. And in my emails, none of them are pure ChatGPT copy paste. First, what I will do is, if I have to meet you, let's say I have to come for your company, especially not for this organization, because there's a mix of crowd. If I have to come only for angel investors, think about this way. The first thing which I will do, tell my team is, इनके बारे में पूरी जलन खोलनी निकाल के रखो. So what they do, they go to comment, they go to publicity, they start researching through prompts each and every bit and piece about you. आपको भी पता नहीं होगा कि आपके बारे में सोशल मीडिया में लोग ये बोल रहे हैं या आपके बारे में ये एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं जो मेरा कंटेंट निकाल के बाहर रखता है. तो मैं कहता हूँ अभी ठीक है, निकाल दिया, अब उसका सेंटिमेंट फाइंड करो. सेंटिमेंट्स क्या है इसके प्रति लोगों के? इस सेंटिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव. मेरे प्रति सेंटिमेंट पॉजिटिव था, इसके लिए आपके एसोसिएशन ने मुझे बुलाया, राइट? सो सेंटिमेंट्स क्या है ऑफ द पीपल इन द सोशल मीडिया टुवर्ड्स इट. And when the sentiment is found out, I come to understand what are the different use cases you guys are working in. Now what I do exactly is that I put those use cases in my work here. So what happens when I am mailing you कि देखो मैं जब आपको आऊँगा यहाँ कोच करने के लिए, I will solve these problems. मतलब यार ये problem तो really मेरा है. That is the way you have to research by using publicity and comment, no longer using Google. So मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कि आप और मैं आज चीज प्रैक्टिकली करें, लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है. एक है विल जो आपके पास है, इसके लिए आप यहां बैठे बैठे हो सुबह सुबह मेरे साथ. दूसरी चीज होता है लैपटॉप. वो कहाँ है? आपका लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो अपने साथ आज करने के लिए? ठीक है, मोबाइल फोन में कर पाओगे? करोगे? ठीक है, चलिए लेट मी शो यू. डोंट वरी, I have made an AI toolkit by which you can always go back to your office and do it. I am sure she's already introduced me on that, so I'll not take much time on this. I'll move further. Okay, let me check. ये काम करने के लिए वापस मुझे इस पर कनेक्शन करना पड़ेगा. वो मैं नहीं करता, सब कनेक्शन ठीक है, वापस बिगड़ जाएगा. Okay, have a look on the left of my screen, दोस्तों. I'm looking at some terms of AI. Actually speaking, AI, ChatGPT, Google Gemini और Gamma केवल नहीं है. वो केवल प्रोडक्टिविटी में काम आते हैं. There is generative AI. They can generate new content basis of the prompt which you give. Core AI ये है जिसमें US टेक कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं. Regression, classification and clustering, 3 fundamental things. दोस्तों आज सैटरडे है, स्टॉक मार्केट बंद है, लेकिन कल तो शुरू था, मंडे था, मंडे होगा शुरू. लेट मी चेक द ITC शेयर प्राइस. I can see ITC share price over here, and if I go in for last 5 days, look at the ITC share price in the last 5 days. Anyone in the room, all my friends, anyone in the room, इस स्टॉक के ट्रेंड को देखकर आपको क्या लग रहा है? Is this going down? Is it going up? Or is it flat? If you look at the last 5 days trend, what do you feel? Is it an uptrend? Is it in downtrend? Or is it flattish? क्या लग रहा है आपको देखकर? Uptrend. Perfect. How do you technically say something is an uptrend? It's very simple. Look at the closing prices. The closing prices in the candle light pattern, which this is coming up. This is a continuous pattern. This is a regression line.
it's going upwards. अगर मेरा closing rates of Thursday is X and Friday is X plus Y, मतलब स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है. अगर मान लो सैटरडे और संडे ऐसा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज नहीं आता which is affecting the portfolio of products of ITC, तो obviously ये अपना ट्रेंड पकड़ के चलेगा आगे, because sentiments towards Indian stock market is positive after the EU-India trade deal. So this guy is going to go up. You know आपके माइंड ने क्या किया दोस्तों? आपके माइंड ने बहुत सिंपल सा एक रिग्रेशन मॉडल बनाया जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो. This one, this over here. So this is a regression model. I can predict stock rates, predict the sales of the next quarter if I have data of 3 quarters. I can go ahead predicting what is going to be the property rates in Panchkula extension after today's announcement that officially Panchkula is going to be made as an AI hub. What do you think tomorrow the rates are going to be? Tomorrow this is going to be in the newspapers. So people like you and me who are probably not of Chandigarh but staying in Bombay would look at the next investment destination. Hyderabad, opportunity lost. Bangalore, opportunity lost. Gift City, opportunity almost lost because everything in Ahmedabad Gift City is 2x the rates. You be in Ahmedabad, X price. Go to Ahmedabad Gift City, price is 2.5x. Where will you go? This is the next AI hub happening. Andhra Pradesh, Chandigarh. It's very clear. Ask anybody who is person like me traveling all over the world, meeting with the people in the AI hub. They are keen in investing in commercial, residential spaces in the places which have been declared as AI hub because that is the way India has to progress. See, we as a country cannot progress in manufacturing too much because we don't have that kind of labor which is skilled and disciplined. Skill आप कर सकते हो, discipline कैसे लेके आओगे? Discipline लेके आना मुश्किल हो जाता है because there are a lot of political factions which get involved with the labor and the new labor code के वजह से it is still now even difficult for manufacturing to really scale up 2x 3x. So now the problem if you look at the macro level in India, the point is that we have to look at all these solutions more than only looking at a generative AI solution. Generative AI is very popular. इसकी वजह से आप सब लोग इधर हो. 90% आप लोगों का एक्साइटमेंट है ना. Ma'am, you would be knowing Puneet ji. Puneet Verma, I believe. President. Yeah, president. Yeah. I met him. आपसे ही मेरी मुलाकात हुई थी. कहाँ हुई थी हमारी मुलाकात? CIA. April 2025. Am I right? Yes. Correct. Were you in the same part of the meeting or different meetings? Same. Same? Okay. So I immediately recognized him. We hugged each other as well in the morning. So one known face, you see, you feel excited when you come in a crowd and you get one known face. So Puneet ji, sir, आपका शुभ नाम? Karthik, correct. Met me at the CIA. Hall was full with 100 people and we covered 520 people from Chandigarh. All over India, I covered 6,500 founders, co-founders. As a part of this initiative of AI awareness, we started in November 2024 से लेकर April 2025. Every day we were traveling to different cities. मैं छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा. मैंने तब भी बोला था और आज भी बोलता हूँ वही बात. 90% people come for any kind of AI workshop because of this. This is taking your money. This is going to make money for you. You are investing your time and money in which is taking money from you. ChatGPT is paid. Google Gemini API is paid. If you want to make the next AI product, तो आप क्या कर रहे हो? आपका टेक स्टैक क्या होता है? बॉटम में आपका LLM है. LLM could be of Google, Anthropic का Claude, OpenAI का GPT. उसके ऊपर आपने एक टेक स्टैक बना दिया. Python के कोडर्स से यूज करके आपने एक लेयर बना दिया. Application can be Gamma, making PPTs. Application probably could be application to make digital marketing content for videos or images for your field of work. आपने बनाया, सब्सक्रिप्शन निकाला इसका, $20 per month, $30 per month और दुनिया को बेचा.
लेकिन अल्टीमेटली आपका $20-30 जो आप चार्ज कर रहे हो एज एन इंडियन कंपनी जिसका नेक्स्ट टेक स्टार्टअप शुरू होगा, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे इन चंडीगढ़, इन पंचकुला और इन द नॉर्थ बेल्ट, उसमें से 70% आपका रेवेन्यू तो उसको जा रहा है बॉटम में, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। बॉस क्यों कर रहे हो वैसे? लेट मी शो यू समथिंग टुडे। I humbly request everyone, मोबाइल फोन तो है ना, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन है ना, go to your browser right now, go to your browser right now. ब्राउजर में जाइए। दोस्तों जो पीछे के रो में बैठे हैं, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आगे कोई भी सीट खाली है तो प्लीज आप आगे आ जाइए। माय इवेंट मैनेजमेंट टीम मेंबर्स विल प्लीज ब्राउजर को खोलिए। अब आप प्लीज टाइप कीजिए huggingface.co. Let me type it for you in amplified version over here. This is so small. huggingface.co. Let me amplify this a bit. दोस्तों, tell me if it's visible. Everyone, yes, no? Yes. Perfect. That's the energy in the body. ये देखिए मुझे चंडीगढ़ की चाय की आपको। huggingface.co. Please type this. Yes, sir. Yes. पहुंच गए? Yes. ठीक है। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, आप you can follow along. इसको बुकमार्क कर लो। आपके ब्राउजर में बुकमार्क की सुविधा होती है, बुकमार्क कर लो जिससे आपको याद हो। I am in Hugging Face website. I have something called as models over here. I click on models. I would be requesting my friend Karthik. Karthik, take the lead and can you please read this figure for all of us in the room? कार्तिक छोड़ो, आपकी आवाज बुलंद है मेरे भाई, खड़े होके बोलो, बस खत्म। क्या जरूरत है माइक की आपको? हाँ 25 lakhs 47,275. 25 lakh models, 25 lakh trained models is there at your disposal free, and you guys are going and paying OpenAI, Google Gemini for basic work. For basic work you are paying subscription charges $20 per month. What's wrong? Let me tell you what this guy can do. 25 lakh models over here. All these models are categorized in the basis of task. I will give you one example for Bosch. The reason being I'm the AI transformation coach for Bosch, so I can validate what is being used. I'm just going on to one particular aspect called directing of object. दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे गाड़ियों में आजकल ADAS सिस्टम होता है, ADAS. In simple words, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर मेरे गाड़ी के अगल बगल में या आगे या पीछे कोई भी बहुत चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, फुटपाथ, स्पीड ब्रेकर, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई आगे गाड़ी, अगर बहुत पास आ गई तो आई गेट अ बीप साउंड, मीन्स आई हैव टू बी केयरफुल। प्लस अगर आप महिंद्रा का तो लेटेस्ट व्हीकल देखो, मर्सिडीज देखो, ऑडी Q3 एंड अबाउ देखो, तो यू कैन कीप इट इन ऑटो पायलट और सेल्फ क्रूज मोड, वो चलता है, ADAS लेवल 2.0 एंड अबाउ। उसमें डायरेक्टिंग होती है ऑब्जेक्ट की, उसमें ये algo यूज हो रहा है, which is freely available to you from Python libraries. Have a look. I'll show you. There are so many libraries available to us. 4,300 trained models available to you. I know you say Rocky, ये कंपनी का नाम मैंने सुना नहीं है, Microsoft तो सुना है ना? Let me go to a good model which is being used very commonly. It's Facebook Data ResNet. ये चेक कीजिए सर। Facebook का जो मॉडल है वो 118,000 इमेजेस पर ट्रेन किया गया है। रॉकी किसने दिया डेटा? आप लोगों ने डेटा जो दिया है फेसबुक को। 12-13 साल पहले जब आपने अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन किया था तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में 23 पेजेस में एक पैराग्राफ था, ऑल योर डेटा कैन बी यूज्ड बाय अस टू ट्रेन, पर्सनलाइज and improve our product portfolio, not product.
लीगली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि फेसबुक मतलब जो मेटा हो गई है, मेटा कंपनी जितने प्रोडक्ट्स निकालेगी उसमें आपका डेटा हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग। आपने 15 साल पहले साइन अप किया था 2011 में, जब ऑर्कुट नीचे गिरा था और फेसबुक ऊपर आया था, हो गया काम। इफ यू हैव अलाउड मी, रिमेंबर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक or any other new product that is going to come, like a metaverse, which has already come, of course, is growing. All these products have been trained on your data. And from that data which has got trained, let me show you one very small example. I am sure in this room there are people who know about coding. I see a lot of young faces. So, it means that you know coding. My friend Karthik knows. Karthik, this looks like a code, right? Any idea which language is this? Oh my God, everybody knows it. तो क्यों बुलाया है मुझे? No coding क्यों कहा था? Coding करते थे हम रूम में, right? Everybody knows it. So this is a kind of a Python code from a package called transformers. ये दो classes import हुए. ये एक image उसको दिया गया. Any image you can give him. कुछ नहीं करना है इस कोड में. इस कोड को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में केवल कॉपी करके पेस्ट करके रन करना है. If you are a first year engineering student doing computer science at Chandigarh University, boss, you know how to run this code. So hire them as an intern, give them some exposure through such kind of workshops, and tell them, boss, मुझे ये product बना के दो. So what these people can do is, these people can make, the young generation can make products for you for which you don't have to spend too much of money. I would like request, sir, please take the lead. What's your good name, sir? Kamaldeep Singh. Kamaldeep ji, please take the lead. I'll ask you very basic questions. How many remotes do you see in this, sir? 2. How many cats do you see? 2. How many couches do you see जिस पर ये सब बैठे हुए लेटे हुए हैं? 2. Perfect. 2 या 1? Couch. Couch तो 1 ही है. Correct. Couch is 1. Remotes are 2. Cats are 2. ये जब इमेज दिया गया इस piece of code को, और कोड है क्या? 20 line code, boss. 20 line program. Program over. This guy gave this output to me. When I ran this code, have a look. You guys don't have laptops, तो मैं बहुत काम करवाता आपसे. 8 घंटे में, 8 घंटे का मुझे पुनीत जी ने बोला 8 घंटे का काम रॉकी आपको 1.5-2 घंटे में करना है. मैंने कहा जी हो जाएगा. फिर ये रन नहीं कर पाई, मैं करके आऊँगा. हाँ जो करना है कर लो, but I want maximum throughput to my audiences. Full done, sir. Directed remote, couch, cat. Wow. Confidence 99.8%. In statistics, anything judged with 95% and above is considered as statistically truth. Statistics का रूल है, कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन जब एक बिजनेसमैन या गवर्नमेंट एजेंसी लेती है तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर लेती है with 95% and above. यहाँ 99.8% का आया है. Location has come. Now how location is marked in computer graphics, my friend? आपको कुछ 4 coordinates वहाँ दिख रहे होंगे. It is marked like this. कोई भी इमेज जो हम लेते हैं उस इमेज में, मान लो एक इमेज है और इस इमेज में यहां इस पॉइंट पर एक रिमोट है. तो दोस्तों होता ऐसा है कि इस इमेज के आप चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाते हो. जो रेक्टेंगल आपने बनाया है, इस रेक्टेंगल का स्टार्ट कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस ये जज कर रहा है, लेंथ जज करता है, हाइट जज करता है. 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए. देखिए जी 4 कोऑर्डिनेट्स यहाँ है या नहीं. ये हो गए आपके 4 कोऑर्डिनेट्स. एज यू कैन सी ये टेक्नोलॉजी है आपके गाड़ियों में टू जज द ऑब्जेक्ट. दिस गाय हैज बीन ट्रेन्ड ऑन 118,000 images, tree, footpath, road, bottle, anything which your eyes can see in this room or even your eyes cannot see in this room, this guy has been trained. आपका मन सोचेगा कि रॉकी ये ट्रेनिंग हुई कैसे होगी. चलो अब ये डेटा, बिल्कुल लेबल डेटा. अब लेबल डेटा मेरे पास तो यहाँ है नहीं, फेसबुक तो डेटा दिया ना. अब यहाँ पर इस रूम में डेटा मैं आपका लूंगा. And I want to give you a very small demonstration. I would be taking help from my friend Karthik. I would be taking help from my friend Kamaldeep ji. I was taking help from also, ma'am, if you don't mind. Will you also help me? Yeah. Perfect. I'll be taking help from you all people. Now, I want your data. Data मुझे क्यों चाहिए? मुझे आपको छोटा सा ग्लिम्स देना है कि हमारे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा कैसे काम करता है. अब लोगों का डॉक्यूमेंट बड़ा सिंपल है.
हम जाते हैं, खड़े होते हैं, क्योंकि हमने अपना बोर्डिंग पास अपलोड किया है, हम देखते हैं कैमरा पर, वो हमारा फेस से डायरेक्ट करता है कि हम हैं, और वो गेट खोल देता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, उसको समझा कैसे कि आप रॉकी जित्यानी हो, उसको समझा कैसे कि आप कमलदीप हो, समझा कैसे आप कार्तिक हो, प्लीज बताइए। हाँ सर, प्लीज माइक दीजिए, एक्सक्यूज मी। ये बड़ा हाँ जी जी सर। Basically, there are two ways. One is the दोस्तों, जो लोग आ रहे हैं, आगे कुछ सीट्स खाली हैं, आप प्लीज आगे आ जाइए। Basically, there are two ways. Yes, sir. In About older that. ways, so we had OpenCV library. Correct. So you can do feature detection and features are matched, then you say that the person is safe. करेक्ट। Or you can have the pure machine learning way. You can take any. मेक अ न्यूरल नेटवर्क एंड Yeah. देन एक्चुअली गेट इट Yeah. ट्रेनिंग। But now the newer way is you take any transformer based model, which Correct. is like few million parameters. So you can take any image word or something like that. करेक्ट। And then have few images, then label them. Okay, this is Mangesh. And this, he's Yeah. looking straight now. He's looking sideways. Correct. Or different lighting conditions, Perfect. stuff like that. Correct. And then you label that and you train that. परफेक्ट। अभी ये एग्जैक्टली जो आपने बोला ना, आपने एक्चुअली मेरा काम हल्का कर दिया। मैं यही काम अभी लोगों से करवाने वाला हूँ। प्लीज सिट डाउन सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई मेक इट नॉन टेक्निकली वेरी सिंपल। नॉन टेक्निकली ये चीज ऐसी हो रही है कि जब आपका डेटा आप जब रजिस्टर करते हो तो इट इज लिंक्ड, डीजी आपका इज लिंक्ड टू आधार डेटाबेस। आधार डेटाबेस में आपका रेटिना का डेटा है। सो द आइडिया इज दैट आई हैव गॉट अ रेटिना। कभी भी नोटिस कीजिए डीजी आता में अगर आपने कैप पहना है विद अ लॉन्ग हुड और सन ग्लासेस, तो आपको सिक्योरिटी वाला कहेगा भैया ये निकालो, तो डायरेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस किया है आपने? मैंने तो किया, आपने किया है? Right. हाउ मेनी एक्सपीरियंस? कम ऑन रेज योर हैंड्स। it will not detect features. एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस फीचर से वो ट्रेंड है उसको ही आपने हाइड कर दिया ना। तो अभी काम करते हैं, जो सर ने अभी बताया। सर आपका शुभ नाम? Mangesh. मंगेश जी, वेरी गुड। So what I'm doing right now is I am just going and I always show this। कार्तिक तो देख ही चुका होगा CI के वर्कशॉप में, लेकिन वापस एक बार और देख लेते हैं। कार्तिक बोर मत होना क्योंकि इज इम्पोर्टेंट। लेट अस गो डाउन टू दिस मॉडल। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब अपने ब्राउजर में मोबाइल फोन में वापस जा रहे हैं, यहाँ राइटिंग पैड लिख दो ना, उसमें राइटिंग पैड है आपके? हाँ बिल्कुल है सर। तो फिर क्यों यूज करो उसे, करो यूज। आई हैव गॉन टू अ वेबसाइट, मैं इसे कॉपी करता हूँ, आई एम्प्लीफाई इट आल्सो। टीचेबल मशीन जिसको आप सिखा सकते हैं, टीचेबल मशीन डॉट विद गूगल डॉट कॉम। खाली डॉट कॉम तक लिख दो बस, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। टीचेबल मशीन डॉट विद गूगल डॉट कॉम उतना लिख दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। I'll wait, write it down please, आराम से लिख दीजिए। Yes. All done दोस्तों? Yes. Absolutely perfect. So now I would like to go down to teachable machine dot amplify it a bit on this website. This is the point where I would like to train my data. Karthik ji, aa jaiye please. Please come. Kamaldeep ji, you will be next. I'll call you one by one. Karthik, please come. Please come, Karthik. Karthik, I typed your name. Am I right in the spelling? Correct. Please correct it. Okay, cool. Hold to record button को press करके रखिए. Yes. कार्तिक को रोकना जब वो 200 images क्रॉस करे। कार्तिक look right, left, up, down. Come on, quick. Yes. Stop him when he crosses 200. Perfect, Karthik. 15 seconds to 25 images recorded. Awesome. I'll call you back. You'll be on the stage over here. I'll call you back. Come on, Divya, you please. Hold the record button. Press the correct key, sir. दोस्तों सेम रूल अप्लाइज टू हिम। इनको भी आप स्टॉप करेंगे जब ये 200 पार कर लेंगे। अप डाउन देखिए सर, अप डाउन।
Very nice, very good. Cool, sir, this side, please, sir. Please, sir. Ma'am, I request you, please. Please, थोड़ा आगे जाइए. Yes. Yeah, type करिए. Correct. Yes, same process. You need to also look right, left, up, down a bit. Yes. दोस्तों, you will stop her when she crosses 200. वापस रिमाइंड नहीं करूँगा. Hold on. हाँ, yes. So 10 seconds, 200 images record हो जाते हैं अपने. Stop. Crowd is very strict. They are very strict. जाग गए अभी भाई, सब जाग गए. Very good. आइए, please on this side. Please come. देखिए, मेरे पास तो आधा डेटाबेस नहीं है ना आपका, तो मुझे डेटा लाइव देना पड़ेगा. एग्री विथ मी सर? डेटा मैंने लाइव ले लिया. आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग वन मोर केस कॉल्ड एज अ नल केस, जहां कोई बंदा नहीं है. एज यू कैन सी, सबका एक कॉमन बैकग्राउंड था. दिस वाज द बैकग्राउंड फॉर ऑल ऑफ यू. डू यू एग्री? राइट? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द बैकग्राउंड जस्ट टू हैव सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट. भाई, जब कोई नहीं है तो नल केस दिखाना चाहिए. दोस्तों, there is a rule of every AI model. I want to tell that rule in a very simplified way. And there are 3-step process. First is, I have to collect as much data as possible which is well distributed. First point. It should be neat, clean and well distributed data. Second point is that this data has to be used for training. देखिए क्या हो रहा है आपके सामने. See what's happening. Training is happening. Preparing training data. So the data is getting trained. That means the AI model is getting trained on data. आप बोलोगे कि AI model है क्या? दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा. Don't worry. The AI model which is given to you by Google is a very simple neural network with 50 hidden layers in between, one input layer and one output layer. Don't worry, it's because I have been asked to say non-technical, non-coding, so I will not speak further about that. We will not talk about weights and hyperparameters and training algorithms. But the whole idea is very simple, दोस्तों, कि we are having effectively a neural network given to you free of cost for training, downloading and using by Google. 2 साल पूरे हो गए. On 31st December 2025, how many of you in this room who are not connected to AI, not like him, who are not connected to AI were aware about this? Please raise your hands. Fantastic, sir. Fantastic. You are aware about this teachable machine? Available for commercial use free of cost? Zero licensing cost? I know today. You know today. Very good. 2 साल पूरे हो गए. 31st December. अभी 2 साल एक महीना होने को आ गया है. So it's high time we know. You know, when I was super excited to know about this, when I told this, and some person at IIT Madras, where I was hosted for 5 days for a similar kind of activity, one person, you will not believe it, he's having a business of 100 crores. को देखकर आप बोलोगे नहीं. White shirt पहना है, धोती पहना है, आया brother, Rocky brother, come here. कभी शाम को 6 बजे जब हमारा सेशन खत्म हो, 9 o'clock we start, 6 o'clock we used to enter. So, इंग्लिश उसको टूटी फूटी आती थी, हिंदी तो बिल्कुल नहीं बात करनी उसको. Let away. So, brother, come here. You told the system, I am using the system at my factory. मैंने सर क्या बनाते? What do you make? We make baby frocks. तमिलनाडु के आउटस्कर्ट्स में उसका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. My son has done computers and engineering from so and so XYZ college, some tier 1 or tier 2 college, not from IIT, not from NITs. When he has somebody in his college told us, he contacted some vendors for high resolution cameras on the conveyor belt. Now the entire work of quality inspection and segregation and labeling is completely been automated by high-end cameras. We expect on the hardware. My son did all the software and he used this model. Wow. That's a practical application which I heard first time in Feb 2025 from a small MSME vendor who is almost uneducated but knows technology को मुझे use कैसे करना है for my benefit. I told sir, what was your staff strength? बोला we have 55 on the floor workers, 55 workers and supervisors because manufacturing पूरा हो रहा है.
टेलर्स वेलर्स नहीं, ये अलग वर्कर्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें से वी हैव रिड्यूस्ड आउट बाय 15 पीपल एंड वी हैव इम्प्रूव्ड आवर रेट ऑफ सक्सेस, आवर रेट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन बाय 50% एंड अबव। मतलब जो 50% मेरे जो एम्प्लॉइज गलती करते थे जिसके वजह से बिकॉज दे वर सेलिंग डायरेक्टली टू अमेज़न और अमेज़न से वो प्रोडक्ट वापस आता था। सी एक मैन्युफैक्चरर के लिए और एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दिक्कत की बात होती है जब प्रोडक्ट आता है रिटर्न, उसका पूरा कॉस्ट अमेज़न नहीं बियर करता, आप बियर करते हो जो बना रहा है। सो दैट इज रिड्यूस्ड by 50-60%. Now we have only 10% rejections coming. Previously, out of 10, 4 is to get rejected. Now out of 10, only 1 get rejected. So wow. And what is the cost of this technology of hardware and software? It would less than 1 lakh crore rupees. एक महीने में पूरा पैसा बाहर निकलेगा. This is great. Exactly. He just and that also he ordered from China, from some websites, and he did all the work. He didn't hire him. He told me that Rocky, when we went down to vendors in Bangalore, in Hyderabad, and also in Coimbatore, we were getting quotation 8 lakhs, 9 lakhs, 10 lakhs. We did the same work our own self in 1 lakh or 1.5 lakh. Look at the margin. Because the software code is absolutely free. Hardware costs hardly anything because of China. Thanks to China. Sir, I'm so sorry मैंने आपको वेट करवाया. अब आपका टेस्टिंग का काम शुरू होता है. अब आप डीजी यात्रा के पहुंच गए एयरपोर्ट पर क्योंकि ट्रेनिंग पूरी हो गई. I was keeping the crowd busy because training was happening. See, training has happened. Now I wish to ask 3 of you. कौन खड़ा है आगे? कोई नहीं तो कौन आ रहा है यहाँ पर? You with me? Everyone with me or not? Karthik, move there. कुछ नहीं करना है Karthik. Just stand. How much? Karthik is there? 100% not? 100%. कार्तिक आज स्पेक्स भूल गया. स्पेक्स निकालो कार्तिक. आज कार्तिक को लगा कि बहुत धूप आ रही है, सन ग्लासेस पहनना चाहिए. एनीवन इन द रूम हैज सन ग्लासेस? lend it to me please. Lend it to me. Karthik, this is rent or mojo. Remember, this is rent or mojo. You have to pay the rent for it. Yes, please go ahead. Ma'am, please allow us 2 minutes. Yes. My God, Karthik, you are the next family man. I'm telling you, you are the next family man person coming in the OTT. Yes, so Karthik is having 100% now. I wanted to prove you one small point, and the point which I want to prove you is कि डीजी यात्रा में अगर आपने सनग्लासेस पहना तो वो रेटिना वो देखता है, आपके फेस को नहीं देखता. यहाँ पर जो डेटा पॉइंट आप दिए हैं ट्रेन होने के लिए, वो आपके कंप्लीट फेस को चेस्ट से लेकर अपर तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है. सो ऑल दीज आर योर फ्यूचर पॉइंट्स. इफ यू कवर योर आईज आल्सो वोंट मेक अ डिफरेंस. बट टुमारो यू टेल मी कि कार्तिक ने सनग्लासेस पहना है, मास्क पहन लिया है, तो फिर ये 100% ना आकर 60-70% पर आके गिरेगा, बिकॉज आप सारे फ्यूचर पॉइंट्स को कवर कर रहे हो. कार्तिक प्लीज, दिस इज रुमाल मान के चेक कर लीजिए. हाँ अभी चेक कर देते हैं. मैं कराने वाला हूँ कमलदीप सर. इनको बहुत मजा आ रहा है कि मेरे सारे टेस्ट. हाँ मैं कराने वाला हूँ. पहले कमलदीप सर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं हाँ या नहीं? जवाब दो उनको. यस. अब लग रहा है चाय नाश्ता करके आया है, उसको पराठे खा के आया. Sir, please can you take a handkerchief and just cover the front part of your face, sir, and the way you wear in a mask. Yes. Absolutely, sir. Perfect, sir. Perfect, perfect. Fluctuation होना चाहिए. Fluctuation नहीं हुआ ना तो मुझे टेंशन आ जाएगा. क्योंकि अंडरस्टैंड करो, अगर एक मॉडल एक डेटा पॉइंट्स पर ट्रेन हुआ है, वो डेटा पॉइंट्स को आप कवर कर रहे हो, तो उस पर फ्लक्चुएशन तो बनना जायज है. नहीं हुआ तो फिर तकलीफ है. Is it fluctuating? Yes or no? Yes. But is still the majority Kamaldeep ji or not? Yes. Perfect. Very good, Kamaldeep ji. Thank you very much, sir. इनको thank you बोलिए आप. Yes. Very good, ma'am. Over there, please. मैम ने डेटा रिकॉर्ड किया था by wearing spectacles, बराबर? Right? एक काम करते हैं, spectacles मैम को बोलते हैं आप प्लीज निकाल दो. Remove your spectacles, please. Are you being recognized, Nikita? Yes or no? Yes. Okay, cool. One more small request. Does anybody has a scarf? Does anybody has a lady scarf? Or the patta? No. Nobody will lend you at the moment. Nobody's ready to lend. They're ready to बताते ही नहीं है. Ah, very good, very good. Okay, good, good. So, दोस्तों, what I wanted to do was, you got one? Oh, absolutely. Thank you very much. You are volunteering
to test the ML model. So kind of you. Thank you. Yes. I think I have got something. You know why I'm doing this, दोस्तों? क्यों कर रहा हूँ मैं? What am I doing? Tell me. Testing. Test all these. I am trying to confuse the ML model to go wrong. इससे क्या होगा? I will understand that if with this, if the ML model can go wrong, I will not record 200 images of her. I will record 400, 200 like this, 200 like this. So in a company's attendance system, go to Google's office in Hyderabad. Can you believe it? They are using this system which Google itself has made free of cost. No swipe, nothing. Just walk in and walk out. But what they do is one very simple thing. They say, listen, to record the data into this, you have to wear our Google का shirt या t-shirt. All of us in this room, हमारा registration कहाँ हुआ? Entry point पर, बराबर, right? You remember today morning? Entry point पर, cool. Imagine this now. All of us have registered online, and we have uploaded our photograph also. We come. Suppose some small young committee at the TIE Chandigarh thought of making an attendance system as an event attendance system by using this technology. जितने भी लोग आ रहे हैं, but थोड़ा सा difficulty हो जाती है because all of us are recorded data in X costume and now when we are coming we are wearing Y costume. तकलीफ है. Think all of us are coming in the same uniform of a tie shirt or a t-shirt with a logo. Imagine this. We uploaded our data in the same way. अगर हमारा शर्ट का कलर सबका, इनका, मेरा, इन सबका सेम होगा, तो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या होगा? मंगेश जी आप बताइए. That's it. तो ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होगा ही नहीं. अभी क्या हो रहा है कि इन तीनों के टॉप के कलर्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो भी एक फीचर पॉइंट एडअप हो रहा है टू रिकॉग्नाइज पीपल. No. Face covering we have done with him. So I just want you to cover the front part so that the color of your dress gets covered up. Yes, perfect. That's the dupatta style. Absolutely. I'm sorry I'm giving you trouble. No, that's okay. But जो सर यहाँ फर्स्ट बेंचर बैठे हैं, मैंने वो चाहते हैं सिस्टम को टेस्ट करना, तो हम करेंगे जरूर. Nikita should fluctuate. Is she fluctuating or not, दोस्तों? नहीं, अभी constant हो गया. That's very good. थोड़ा सा मूव करोगे तो आपका वो फ्लक्चुएट करेगा. Your facial features have been very well recognized by the system, and that's also one critical point because you being from a different gender from these two, so that also becomes a different distribution class because of the skin tone, the eyes, the face cut is quite different from others. Are you with me, दोस्तों? Yes. Absolutely perfect. अब एक छोटा सा काम करते हैं. मैं यहाँ एक रैंडम ऑडियंस को बुलाने वाला हूँ यहाँ से, जिसका डेटा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था. तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? It should be null case. It won't be null case because एक इंसान तो आ गया, नल तो है नहीं वो. तो क्या होगा? I think हम तीनों का fluctuate करेगा. तीनों का फ्लक्चुएट करेगा. जो फीचर उसको यहाँ से मिलेगा वो पकड़ेगा. Great. Dr. Kadam Bambari, can I request you to please come here? Okay, I know her from CIA and she's also done a certification course from CIA under me. Absolutely, please come. Come from that. Yeah. Yes. Can you introduce yourself before on the mic there, please? Hello everyone. Now hold on. Let me just turn this on. Just turn it on, please. Yes, it's on. Yes, now it's on. Yeah. Hello everyone, I'm Dr. Kadam Bambari and I am with Rocky sir. I have done a course from Rocky sir under CI with CII. So that is AI for MSMEs and I am teaching coding, robotics and AI to students in US and I'm a CBSE trainer also and conducting workshops in different schools of the city. Absolutely. And you're an entrepreneur also. Yes, I'm an entrepreneur also. Absolutely. अब मुझे अब आप बताइए, while you were speaking and the camera was looking at you, people are looking at here. Yeah, so you please keep looking there at the camera. Is it fluctuating? Yes or no? Yes. Yes. Do you see more element of Nikita Yes. in the data set? Yes. Yes or no? Yes. Now, ask me questions. Anything which you have. Sir, over to you please. But you have to be louder because mic बहुत time लग जाएगा पढ़ने. Please stand up, be louder. Yes. क्या? Yes, I can hear you now. We can pass the mic.
Yeah, very much. You can continue. My question is, why is it fluctuating? हाँ. It should keep static. Like if it has vertical Yeah, lines. it will keep static if she is static. She was speaking, no? So her face muscles were moving while she was speaking. And she was looking towards me while I was talking. She was looking towards you. So if your face is stand still, the way we stand on DG यात्रा, वो जो बना हुआ है मार्किंग वहाँ खड़े होते हैं ऐसे और वहीं देखते हैं एक टका. तो जब टकी हम देखते हैं हमारे आईज नहीं मूव होते, मसल्स रिलैक्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी फिर कांस्टेंट रहेगा. Fluctuation not come. Little movement here and there, fluctuation will come. You with me? Yeah, sure. Great. I have a question. Please, ma'am, please get up. Please get up. Please go ahead. Please, can you pass on the mic? They are giving you data now. You should appreciate them. Ma'am, over to you, please. So if the AI is so advanced and we use facial recognition, I just wanted to just check, how do criminals kind of go abroad, go into the airports, have a red corner notice, a blue corner notice and still manage to escape? Ma'am, there is a word called corruption. So, A, B, C के बाद A से AI आता है, B को पता नहीं किसने ले लिया, C से आता है corruption. तो ये उसका रीजन है. इसका AI का कुछ फॉल्ट नहीं है मैम. बाय द वे, दोस्तों जो मॉडल थैंक यू आप लोगों ने ट्रेन करवाया है आप तीनों ने, वो मॉडल का पूरा कोड यहाँ पर आ चुका है मेरे पीसी पर. प्लस आई कैन डाउनलोड दिस मॉडल. टेंसरफ्लो में जाता हूँ, आई कैन डाउनलोड दिस मॉडल. मतलब जो ट्रेन्ड मशीन लर्निंग मॉडल है 3 लोगों के चेहरे को रिकॉग्नाइज करने का, आई कैन डाउनलोड ऑन माई पीसी. हर बंदे को बोलूंगा मेरी छोटी सी ऑफिस है यार, छोटी सी ऑफिस 10 लोग 15 लोग काम करते हैं, हर एक को बोलूंगा क्यों वेबकैम को वेब कैमरा लगाना, आओ एक लैपटॉप शुरू है, आओ अटेंडेंस मार्क करके चले जाओ अपनी सीट पर. हो गया. सो आई हैव गॉट द पाइथन कोड टू रिकॉग्नाइज योर फेस. I have to write some 100 lines code more to mark your attendance in the Excel sheet. What is the big deal about it? You see, I am not using any APIs. I am not giving my data to any US-based company's database. I am not training. You are well aware now on ChatGPT, Google Gemini and Anthropic Claude, whatever prompts you type and whatever files you upload, they are also using it for their self-training. You are aware about it? Sure about it, right? I am not doing that. I have trained it on Google's model, downloading the AI model on my PC, and Google in its terms and conditions has very clearly said that teachable machine का कुछ भी चीज हम आपसे नहीं ले रहे हैं. They are very clear in the terms and conditions. If you want to research on that, you can research. Teachable machine में आप 3 चीजें कर सकते हो: training on images, training on audio, training on video. And can you think about this $1 million revenue which Cult.fit app is generating? How many people have heard about this app called Cult.fit? Please raise your hands. My friend here, can you please tell us what is the Cult.fit app? Please get up and tell us. Cult.fit is a fitness app that helps to recognize calories and. Goes back, not able to hear. Cult.fit is a fitness app that helps to recognize calories intake and you can take the photo of your meals with it. Okay. Cult.fit का revenue model वो नहीं है मेरे भाई. उनका business model है that coaches, fitness coaches, many fitness. I am a coach in AI transformation, but there are thousands of fitness coaches who come online. They run their courses, they run their programs on video. Thousands of people join them live, and people pay them. Right? Tell me one thing. They have so many money guarantee or weight loss guarantee programs. एंड गारंटी मतलब अगर नहीं हुआ बॉस पैसा वापस. आप Cult.fit के ओनर हो, मैं आपको ज्वाइन करता हूं और मैं कहता हूं कि यार मेरा बॉडी लीन है बट मुझे अपने बॉडी को मस्कुलर बनाना है. आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स. आई ट्राई टू कीप माय फैट इन 5 to 10% रेंज सो दैट आई शुड रिमेन लीन. दैट मेक्स मी एक्टिव, बट आई वांट टू नाउ बिल्ड अप मसल्स. सो आई वांट टू बिल्ड अप मसल्स एंड आई पे 10,000 rupees फॉर अ 2 months कोचिंग टू यू व्हिच इज ऑनलाइन. एंड इट्स अ मनी बैक गारंटी प्रोग्राम. नहीं हुआ तो पैसा वापस. आप मुझे बताओ आप कैसे वैलिडेट करोगे कि मैं एक्सरसाइजेस को बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बताओ. और आपके एक बैच में 1000 लोग हैं. 1000 people. हाउ डू यू वेरीफाई मी? क्योंकि इट इज ब्रॉडकास्टेड ना. आपका जो कोच है Cult.fit का वो एक्सरसाइज कर रहा है,
कि वेट्स ऐसे उठाने हैं, ओके एक्सरसाइज ऐसा करना है फ्लेक्सिंग का, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या हाउ डू यू नो? Will not know. If you upload the images daily progress. Okay. Images Any other solution? Any other solution in the room? Capture the data, different data points. Mobile has a camera, right? So मोबाइल ऐसा कैमरा नहीं सर, आप आंसर मत कीजिए क्योंकि आपको पता है जब आप ओपन सीवी में चलेंगे तो आपको पता है आई वांट हिम टू आंसर बिकॉज़ यू यूजिंग cult.fit ऐप। आई वांट यू टू थिंक। सी एआई इज अ माइंडसेट। एआई कोई सॉफ्टवेयर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इनएक्सेसिबल है या बहुत महंगी है, कुछ नहीं है। इट इज अवेलेबल इन फ्री आल्सो, पेड आल्सो, सुपर पेड आल्सो। मतलब लूट जाओगे आप खर्च करते करते उनके ऊपर, इतने ही महंगे आ जाते हैं। So, बताइए सर, हम सब आपको देख रहे हैं सर, वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग सम आंसर फ्रॉम यू। प्लीज anyone to help him, come on, raise your hands. Anyone to help him? He wants to answer. Yeah. Pass it on to him, please. Chacha ji, please Yeah. come here, sir. Please come. Good morning. We can ask the user to upload the food pics just before eating and videos of exercise. Okay, now I'll tell you what is their trade secret from last 2.5 years, sir. Post-COVID. Please hold the mic with yourself. What they did, hear me out. They are having an average about 8,000 registrations every month for different coaching sessions. Some yoga, some for ladies, some for pre-pregnancy, post-pregnancy, weight loss, weight gain, muscle building, etc., etc. Now, they are having approximately about 8,000 registrations every month. At an average ticket size is 10,000 rupees. 8,000 to 10,000. उसमें से 30% ऑफ देयर प्रोग्राम्स आर मनी बैक, मनी गारंटी प्रोग्राम्स। रिजल्ट नहीं मिला, बहुत पैसे वापस। अब उन्होंने सिस्टम क्या किया, दे टेल इन अ मनी बैक गारंटी प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू कीप द कैमरा ऑन। टर्म्स एंड कंडीशन में कैमरा ऑन रखो, मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप पूरा शूट हो रहे हो। बट मुझे बात बताओ सर, अगर आप बहुत पॉपुलर कोच हो और आपके सेशन में 1000 लोग बैठे हैं, आप कैसे एज एन इंडिविजुअल ट्यूटर और इंडिविजुअल कोच, you are focusing on your exercise, right? You are focusing on what you are speaking. Like in this room, I am focusing on what I am speaking consciously. मुझे नहीं पता ना कि आप कितना समझ रहे हो या आप कितना सुन रहे हो, right or not? There could be one person in the room looking at his WhatsApp. So that is more interesting. वो भी AI है, please देखिए, बिंदास देखिए, वो भी AI है. But the idea is this, that how do I know that you are participating with me in the kind of coaching which I am doing? Simple. They record the video. Can you believe it? They have done teachable machine with google.com, very free model. They have gone for 3 sections. इसके अंदर आते हैं इमेज, ऑडियो और वीडियो। उन्होंने वीडियो का पार्ट उठाया और वीडियो के पार्ट को उन्होंने ट्रेन किया on with the trainer himself, with the you know, they have people onboarded also on their payrolls जो काम करते हैं। They train on all exercises. Okay, every exercise which are in the gym you could do for every different part of the body's muscle building or muscle losing kind of, उन्होंने ट्रेन कर दिया। अब जब ट्रेनर बोलता है कि ये वाला एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो एमएल लोगों को पता लगता है कि ये वाला एक्सरसाइज का ट्रेंड इमेज उठाना है। ट्रेंड इमेज से कंपेयर किया आप क्या कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ट्रेंड डेटा, यू आर 80% सिमिलर, थ्रेशोल्ड मार दिया उन्होंने। अगर आप एट एन एवरेज 80% एंड अबव सिमिलर एक्सरसाइज करते हो तो नेचुरली आप फॉलो कर रहे हो, मुझे रिजल्ट्स नहीं आया तो बहुत पैसे वापस। ऐसे में हो गए 100 में से 1 या 2 लोग जो पूरा फॉलो कर रहे हैं और उनका बेनिफिट उनको बॉडी को मिला ही नहीं। 2%, आई डोंट माइंड पेइंग बैक 2% पीपल इफ आई एम गेटिंग 98% पीपल इनसाइड, बट 98 में से 70% पीपल फेल इन द टर्म्स एंड कंडीशंस because your attendance have to be 80%, your threshold is about 80 or 85%. You have to do the exercise exactly as a trainer is asking you to do, otherwise results नहीं मिलेंगे। आप ट्रेनर आपको बोल रहा है स्क्वाट, आप स्क्वाट कर रहे हो, ये स्क्वाट है, ये स्क्वाटिंग, so you are not squatting. So obviously my resemblance with the trained data is 20%, so I will not get my refund back. And they have made a few millions in the last 2 years on with zero inventory. बस आप एक कोच हो, आप बैठे हो केरला में, चंडीगढ़ में, कोच्चि में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, आपको मैंने लिया तो क्या आप लोकल रन कर रहे थे? अच्छा, मैंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, you became popular all over the world like Spotify. You became popular all over the world. I use AI technology to assess people.
हैव टू डू एडवर्टाइजमेंट, अब तो एड भी देना बंद कर दिया उसने, कुछ तो रिकरिंग चीज है, क्योंकि वंस यू जॉइन बेनिफिट हुआ बॉडी का 4 लोगों को आप और बोलोगे। ऑसम बिजनेस मॉडल यूजिंग एआई with 120 people, you generate so high revenues. Awesome. Thank you very much, sir. I Thank just you. want to ask a question. Is Sir, the please. scheme followable? Is it infallible? Means the system makes no mistakes? No, of course it makes mistakes, and it is human monitored also. There is a human in the loop also who checks up. But the idea is the human does the work of RSM. Good question you have asked. ये word लिख दो ना अपने writing pad में, please लिख दो ना writing pad में RSM. Full form of RSM is Random Sampling Moderation. Random Sampling Moderation. मतलब इसको एक टेक्निकल टर्म भी दिया गया है, सॉरी नॉन टेक्निकल टर्म भी दिया गया है, ह्यूमन इन द लूप. सॉरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट है ये, ह्यूमन इन द लूप. तो जो मैम ने पूछा, कहने का मतलब सिस्टम्स कैन गो रॉन्ग बट देयर शुड बी वन पर्सन. अब मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स अगर है तो 1000 को तो मॉनिटर नहीं कर सकता. व्हाट आई विल डू, आई विल मॉनिटर एवरी डे 5 आउट ऑफ 1000 रैंडम पिक. अगर मुझे एक भी रैंडम पिक मिला जहां सिस्टम रॉन्ग जा रहा है, और आई विल कॉन्टैक्ट माय एमएल इंजीनियर्स, बॉस सिस्टम को करेक्ट करो, सिस्टम इज गोइंग रॉन्ग. आई विल गिव इनपुट्स एज अ ह्यूमन, सिस्टम विल बी रीट्रेन्ड सो दैट टुमारो इट डज It's a continuous process. बेटर. इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एब्सोल्युटली. और वो कंटीन्यूअस प्रोसेस उसने मास्टर कर लिया है. दैट वे. कूल दोस्तों. सो first of all, thank you to my friends Nikita, Kamaljeet ji and Kamaldeep ji and Karthik for giving your data. I am not taking your data away. Responsible AI. I am going to close this. The data will not go out from here. Some examples around us, dosto. Some examples around us. Do you agree? DG Yatra is an example of CV. CV का full form होता है computer vision. Do you agree it's vision? Is CV? DG Yatra is example of CV. So it's computer vision. आप कहोगे रॉकी ये सब कौन से एयरपोर्ट पर होता है? चैटबॉट्स फॉर ट्रैवल इंक्वायरीज, वॉइस सर्च फॉर बुकिंग्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, ऐसे यू नो काइंड ऑफ वर्चुअल चैटबॉट्स हमने तो नहीं देखे किसी एयरपोर्ट पर. आप एक प्लीज कभी आइए बंबई का T3 एयरपोर्ट जो न्यू लॉन्च हुआ है 25 दिसंबर 2025. यू विल फॉरगेट द एयरपोर्ट ऑफ लंडन, एम्स्टर्डम एंड एनी अदर कंट्री. आप पूछो. टिल नाउ पीपल से दैट द बेंगलुरु एयरपोर्ट T2 इज द बेस्ट. Next best is Mumbai Airport, T2. One notch up. I agree. 70% of the airport's interior has to yet be constructed. But trust me, what they have made and what they are forcing to make in the next 2 years is 2 notch above even international. Seen the airports of Mexico, Amsterdam, London, as well as all the Indian airports, they are going 1 class above. They are using technology to the best of the capacity. So this is all there, and what they have made is they have made it as, I should use the word, foreign language friendly. मैं कोई भी स्टाफ हायर करूं वो कितना लैंग्वेज बात कर पाएगा. So what they have done exactly is that अगर आपको कुछ भी क्यूरी है, go and stand on the machine, show your passport, he recognizes you, says hi Kamaldeep ji, hi Nikita ji. तो वो आपसे बात करता है in the form of an avatar, and you choose your language, Spanish, Telugu, Tamil. He starts speaking in that languages for you. कि आप एयरपोर्ट इतना बड़ा है, you feel confused. मतलब it's like 1 kilometer walk daily on the airport. It's like too much, so you feel confused. आप कुछ भी पूछिए बताएगा आपको. So you know you, because see once you're coming from a foreign country, you may not have every piece of information when you land. कुछ चीजें आपको मालूम करनी होती है. So this guy is kind of helping you. It's a good application of NLP. दोस्तों anybody can NLP? उनके जी आप नहीं आप आंसर नहीं करोगे सर. Please. I want to give turns to others also. Please बोलिए. Yes sir. Please go ahead. It's a natural language processing. So it is a natural language processing. ये क्या होता है NLP? मतलब natural language processing का मतलब क्या होता है? सर जहाँ पे हम ये अपना जो हमारा वॉइस असिस्टेंट होता है, बेसिकली सारी जो हम ट्रेनिंग होती है सारी NLP पे चलता है. ओके, मतलब आपका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि ChatGPT, Google Gemini, Claude are all good examples of NLP? Right. Absolutely. क्योंकि आप प्रॉम्प्ट लिखते हो इन नेचुरल लैंग्वेज, वो आपको काम करके आउटपुट देता है. आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ NLP. ऑल दिस आर आल्सो NLP एग्जांपल्स. दोस्तों मुझे हेल्प करो
ये चीज, what do you see on my screen? What is happening? Now scanning of luggage 2 years ago in the mega metro airports was being done by the acumen of the security officer. So खाली स्कैन लिखता था, वो जज करता था, अरे ये बॉटल है, अरे यार कुछ दिख रहा है, मेरे को कुछ सस्पिशियस दिख रहा है. अब मूव करता तो है सिक्योरिटी वाला, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा the CV algorithms are doing a more powerful job at airports, New Delhi airport, Mumbai airport, new one as well as T2, Bangalore airport. I am telling you this is facts. ये airports में they have used good amount of CV technology to ensure that nothing suspicious, even the slightest thing, can actually enter through your bag internally. How much have you covered because they are using CV, not only simple X-rays. Can you identify this for me please? इसमें से कौन सा application NLP है, कौन सा CV है और कौन सा दोनों है? Anyone who knows all the three answers volunteering to give. I want people in the second half of the people to give it. Come on. Come on, Nikita is coming towards you. Yes, yes, there is, sorry, class sorry, Chandigarh University, sorry. Though I am not into technology, but first is NLP, second computer vision, and third is both NLP and computer vision. Madam, next time इन्होंने मुझे नहीं बुलाना, आपको ही बुला रहे हैं. बता रहा हूँ मैं आपको. Yes. You are please, because some people didn't pay attention. Can you go once again with your answers, please? Yeah. First is an example of natural language processing (NLP). Second is computer vision, and third is both NLP and computer vision. Absolutely, absolutely. Thank you very much, ma'am. What's your good name? Hina Basra. Very nice, very nice. So you could answer so well. I will be hoping for more answers from your side also in the time. Is it into trading? Is it into service? What? Come on, give me some inputs from your side. People who didn't raise hands. Service. Digital marketing. You are in digital marketing, Karthik. Okay. Karthik is in digital marketing. Come on, give me some random answers from your seat. Service. Service like what? IT services. IT services. Okay. Cool. So some simple cool examples for defect detection, quality control. AI is being used a lot. That's called MV, machine vision now. Then you are having AI for demand forecasting. Most of the MSME companies, I strongly recommend that they should be going ahead and using demand forecasting, not for the purpose of knowing kitna sales hoga, but also to know what is going to be their cash flow, what kind of inventory they need to stock. They should not overstock and understock, because most of us are victims of that. And also the resource planning, people hiring or not hiring. Use case 3, AI for machine breakdown prediction. And most common AI use case, जो मेरे ख्याल से आप लोग यूज कर रहे होंगे अगर आप B2C में होंगे, और वो ये है. How many people have WhatsApp support chatbots for their customers? और how many people develop WhatsApp chatbots for their customers? आपका डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो आप तो करके रहते होंगे. How many people? 3, 4, 5, 6, 7. Okay. मुझे बात बताओ. का इंटरफेस में, इंडिगो के इंटरफेस में, Amazon के इंटरफेस में आप बुक करते हो कोई प्रोडक्ट तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट बुक है, थैंक यू, आपका ट्रैकिंग आईडी ये है. Then the day of delivery it says the product is getting delivered to you. मुझे बात बताओ, ये WhatsApp के ऊपर क्यों शिफ्ट हो गया? 4 साल पहले तो ये लोग मैसेजिंग में थे. What was the natural tendency to come to WhatsApp? I wish to know from you. Ease of use. Free of cost. Ease of use, absolutely. It's we haven't to pay any subscription for WhatsApp, absolutely. Sir, आप कुछ बोल रहे थे? Access of APIs, right? Anything more? Access of internet. Even if you are not getting the cell towers, internet is there, Wi-Fi is there. So WhatsApp is already running. It's a long process from the SMS service, but from the APIs, it's pretty easy. Pretty easy. Perfect. Perfect. Yes. Is limited. We cannot make much coding or AI things there. Correct. But WhatsApp is like we can multimodal. Multimode, and they are. I can put images. I can put videos. Yeah. Like as a WhatsApp, they also have AI things they are doing. Once we passing data to them, they can process and do the other AI activities which we can't do with the messaging. Very good. Absolutely very very good. Character limit नहीं है, उसमें एक लिमिट आ जाती है SMS में. Correct. सबसे बड़ा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सेट करो. What's your good name, sir?
राकेश जी आपने 100 बात की एक बात बोली है. WhatsApp is the most commonest messaging application, adapted comfortability, usage aspects say among all of us in India. May not be in UAE because it is banned there, may not be in China, it is not allowed there, may not be in Russia, it is not allowed there, but in India, yes. So most of the companies are looking at, I'm talking about the smaller companies, to uplift their branding, not from perspective of visibility, but uplifting their branding recognition. See, there is always a respect factor which comes to your brand when you start doing this small technological gimmickal things. Marketing agencies and tell them, boss, मेरे को WhatsApp chatbot बना के दे दो, which should be able to handle any query which the user is asking. तो you know कार्तिक क्या बोलेगा आपको? कार्तिक बोलेगा भैया बना देता हूँ, लेकिन आप काम करो पहले, आप एक पहले काम करो, आप मुझे पहले एक FAQ बना के दो, frequently asked questions. Am I right, Karthik? Karthik will first ask you for maybe 100 FAQs. कि क्या सवाल लोग आपसे पूछ सकते हैं? You will give him all 100 FAQs related to your product, your service, your company and your contact details. आपने दे दिए. उसमें ऐसे सवाल भी होंगे जो होंगे nonsense and rubbish जो लोग पूछ सकते हैं. And you have the answers also. You know what he will do? He will use an LLM, like an OpenAI, or probably use a SLM. SLM का मतलब होता है small language model. Small. I just like to put a small list in front of you. SLM, small language model. MLM, medium language model. LLM, large language models. दोस्तों, what companies are charging you is only for using LLM. You have the SLMs and MLMs almost free of cost to use on Hugging Face. Let me show you a small glimpse of it. बहुत छोटा glimpse दिखाना चाहता हूँ आपको. If you have more data, then you can use RAG. Absolutely, but sir, RAG will again be based on LLMs. तो यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है. huggingface.co/chat. आप मत जाइए, आप खाली व्यू कीजिए मेरे स्क्रीन पर. प्लीज व्यू कीजिए मेरे स्क्रीन पर दोस्तों. I have come to a website called huggingface.co/chat as you can see on my screen. यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, I don't know मैं कितना एम्पलीफाई कर पाऊंगा दोस्तों. मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन पर हूँ मैं. Can you see some figure here दोस्तों? Karthik, Kamaldeep ji, wherever Kamaldeep ji is, okay, he's not over here. Karthik, you're here. Can you verify this? कितना आ रहा है आपको ये मॉडल्स? क्या आ रहा है आपको? 104. ये 104 मॉडल्स है. MLMs, open source models, free downloadable on huggingface.co. और ये मॉडल्स यहाँ अवेलेबल है. अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो I can see all these models have come in front of me. Please have a look. These are आपने नाम भी नहीं सुने होंगे इन मॉडल्स के. Omni, Moons, Hotai, Zai, Minimax. You'll say, okay, ये सब मॉडल्स तो डीप सीक मॉडल चाइना के, क्या करना है आपको उससे? एक सेकंड. I want to ask you, you are as MSME, you want to automate your work, you want to build a system by hiring a few com science intern engineers from Chandigarh University and you want to give them a project. Why are you worried about the fact that you are downloading the model, you're not giving them your data to train. बहुत सारा मॉडल डाउनलोड कर रहे हो अपनी लोकल पीसी पर और वहां पर वो ट्रेन हो रहा है. मैं एक नेक्स्ट लेवल जा रहा हूँ मंगेश जी. रैग सिस्टम इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डेटा ऑफ योर्स, LLMs की NLP capacity of the US based companies. I am telling that take this data and train a SLM, small language model. That is the future. All the big companies since second half of 2025 are looking in that direction. The enterprise customers actually they don't believe with OpenAI. Absolutely. They don't say they say no, we will not go at all because they have such strong IP. Central government of our country, state government of our country, Sarvaram AI, Bharat GPT. There are so many such SLMs and MLMs which have got trained by our Indian startups, which are now doing awesome job. I was at Kanpur exactly last week to inaugurate. I was called upon by the Indian Association there of Kanpur. It had a lot of media coverage also done. It has come in almost all the local Kanpur newspapers.
I was made responsible by Wadhwani Foundation. Wadhwani Foundation, थोड़ा सा गूगल करके आप चेक कर लेना. They have contributed. Dr. Romil Wadhwani has given $1 billion to the Indian government. Tied up with IIT Bombay, पूरा उनका वहाँ पर ऑफिस है, IIT Kanpur and IIT Madras to open a next research cell. And what Wadhwani Foundation has done, I just like to show you a small glimpse of it. Maybe you like it. They downloaded this kind of a model and they have trained it on MSME data. Let me show you this. Wadhwani liftoff.ai. Wadhwani liftoff.ai. आप लिखना चाहोगे दोस्तों राइटिंग पैड में? जरूर प्लीज लिख दीजिए सर. शायद आपको नहीं सुना होगा क्योंकि लास्ट वीक लॉन्च हुआ. आई वाज द वन हु लॉन्च्ड इट दैट वे एट कानपुर बिकॉज IIT कानपुर में उनका रिसर्च सेल वहाँ खुला है, तो दे वांट टू प्रमोट